Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Asad Yaqub and I have received another parcel. Actually, I ordered some more books and I thought I should open this parcel in front of you ताकि आप लोगों को भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले कि हमें बुक पढ़नी चाहिए. At the moment, I'm here at Gloria Jeans enjoying my favorite coffee and just yesterday I received this parcel और ये कुछ 4-5 किताबें थी जो मुझे लगा कि वाकई मुझे पढ़नी चाहिए and I'm gonna tell you about them. So let's see. Where should I open it from? Okay. Yes. Cool. I love the books. Well, the first one which I'm going to show you, it's this book, basically The Path to Personal Power by Napoleon Hill. It's not written by Napoleon Hill, but actually they've got the Napoleon Hill publication and Napoleon Hill Foundation. So they have published this book and it's a fantastic book on personal power. I just read the review of this book और फिर मैंने सोचा कि मुझे ये किताब ख़रीदनी चाहिए और मंगवानी चाहिए. So this is the first book और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देख के दिल चाहेगा, बल्कि दिल ललचाएगा. दो चीज़ें हैं, मेरे हाथ में एक किताब है, एक कॉफ़ी है. जैसे कॉफ़ी को देख के आपका दिल ललचा रहा है कि मुझे भी कॉफ़ी पीनी है, मैंने भी कॉफ़ी पीनी है whipped cream के साथ एंड ऑल दैट. एट द सेम टाइम बुक को देख के भी आपका दिल ललचाना चाहिए कि मैंने भी किताबें पढ़नी है एंड ऑल दैट. So this is the first book. The second one is Start with a Why. It's another amazing book, Start with a Why. How great leaders inspire everyone to take action. मीन कि आपने एक्शन कैसे लेना. हम में से बहुत सारे लोग प्लानिंग्स तो करते हैं लेकिन वो प्लान्स जो हैं एक्शंस में कम ही जाते हैं. सोच ही सोच में हम लोग हवाई किले बनाते हैं और उड़ा देते हैं एंड ऑल दैट स्टफ. सो दिस इज रिटन बाय साइमन साइनिक and he's a very popular writer and this is the global bestseller book, right? So you should read that और मैं ये सारी किताब पढ़ के then I can give you a review of that as well. Basically this book is about why are some people and organizations more inventive, pioneering and successful than others. It's all written at the back. Will you please show them so you can just see that? Okay, so लग रहा है ना. अब मुझे ये बताएं, इसको देख के दिल ललचा रहा है या इसको देख के दिल ललचा रहा है? Okay, so far I have told you about two great books and these two books are actually wonderful. Let's go on. ये मैंने 4 बुक्स मंगवाई हैं, देखते हैं और क्या है. Wow, it's amazing. Daniel Kadiak and Daniel Kadiak की बुक है Who Says You Cant, You Do. Who says you can't, who do means कि आपको कौन कहता है कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं. अब इस बुक में क्या है? Do you want to change your life? Well, who says you can't? कि क्या आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं? ये राइटर कह रहा है. तो कौन कहता है कि आप नहीं बदल सकते? ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसको. So it's another fantastic, lovely book and Asad Yaqub is gonna read these books and definitely I'll be preparing more seminars on these books as well. And then the last but not the least, okay, this is a brief history of everyone who ever lived. बेसिकली अब तक जितने भी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ आई हैं उन सब की एक ब्रीफ हिस्ट्री है. जितने भी बड़े बड़े लोग आज तक आके गुजरे हैं इस दुनिया से उन सब की एक ब्रीफ हिस्ट्री है. द स्टोरीज इन आवर जीन्स, ये वो कहानियाँ हैं जो हमारे जीन्स में है, इंसान के जीन्स में है, राइट? सो एक्चुअली इट्स रिटन बाय एडम रदरफोर्ड. Adam Rutherford has written this book and he says an extraordinary adventure and this is a story about you. I mean great लोगों की कहानियाँ हैं और basically ये कहानी आपकी है. So these are the 4 books. ज़रूर खरीदिएगा, ज़रूर पढ़िएगा. We've got this one, we've got this one and then we've got these 2 books. Okay, and what I do, I love to read the books along with coffee. So this is a perfect combination for me. किताब और कॉफ़ी. काफ से किताब, काफ से कॉफ़ी, बी से बुक और सी से कॉफ़ी. लेकिन कॉफ़ी के लिए हम बीन्स का वर्ड भी यूज़ करते हैं. सो बी फॉर बुक्स एंड बी फॉर बीन्स, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हो तो आप अपनी ज़िंदगी को इंजॉय कर सकते हैं. असद याकूब विशेज़ यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम ग्लोरिया जीन्स कॉफ़ीज़ गुलबर्ग. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.